Well, Hindi films have been a bit uncomfortable when it comes to showing sexual desires of female characters in the films. और इसी मुद्दे पर जोया अख्तर ने Zoom के साथ एक exclusive interaction में बताया that how things are now changing. No, it all depends on what your story is, what your narrative is, where they fit in, what the context is. I mean, I don't think sexuality is something that is specific to a strata. It's a human condition. It's a human force. You know, it's a life force. It's actually the life force, which is sexuality. It runs across all people, and why shouldn't it be out there? And why do we pretend that it doesn't exist, and why do we subvert it, and why do we have to put it out in a vulgar dance move or in a in a pretentious scene which is wrapped in love? Sometimes it's just physical attraction, sometimes it's just physicality you need to discuss. And it depends on what the story is and what context they come in. You know, with Ranveer's mother, and she's a young woman, you know, she's coming from a space of anger, she's coming from a space of neglect. Whether it's Alia, which is a love story, you know, and there's tenderness in it, and whether it's the Sky character, the Kalki character, which is pure attraction, you know, but that's also affection, and that's also positive, and that's also friendship, you know. So I think it's healthy, and I think it's normal, and it's natural, and I think it's important to see it on screen in a way that's consensual, you know. I mean, I grew up in a generation where we could only see rape scenes. Consensual sex wasn't allowed, or kissing wasn't allowed, but rape scenes were allowed, which is kind of weird. So you grew up only with abuse, and it's a very strange and very disturbing way to see sex and sexuality, you know, where women are not supposed to want it, and men, it just wasn't clean. And I think it's very important to put consent out there, and tenderness out there, and what it's meant to be like. It needn't always be about love, you know, but what is healthy. हमने बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा से ये देखा है दैट जब सेक्सुअल डिजायर की बात होती है और अगर वहां पे एक मर्द की सेक्सुअल डिजायर की बात हो, बहुत आराम से बात होती है दैट यार बहुत दिन हो गए, मस्ती मजाक सीरियसनेस बहुत आराम से बातें कर लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ वुमेन, तो उस एरिया पे कोई जाना नहीं चाहता, उस टॉपिक को कोई छेड़ता नहीं है, उस टॉपिक को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है. रिसेंटली एक बहुत ही बोल्ड अंदाज देखा था हमने वीरे दी वेडिंग में, जहां स्वरा भास्कर इज डूइंग अ सीन जिसके लिए वो काफी ट्रोल हुई थी, बट दैट हैज बिकम द स्टार्ट जहां पर खुलकर एक विमेन के सेक्सुअल डिजायर के बारे में बात की गई. उसका फर्स्ट रिएक्शन था ट्रोलिंग, बट एटलीस्ट थिंग्स हैव स्टार्टेड. एंड इवन इन गली बॉय, रिसेंटली गली बॉय मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं, इस मूवी में कुछ ऐसे सीन है, फॉर एग्जांपल एक सीन है आलिया भट्ट का जहां शी टेक्स द फर्स्ट मूव, जो कि दर्शाता है दैट उनकी भी फीलिंग है, दे आल्सो वांट, एंड देयर इज नथिंग बैड इन इट. फिर रणवीर का जो मॉम का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनका भी एक सीन है. जब आप वो मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट कितनी खूबसूरती से जोया अख्तर ने इतने बड़े मुद्दे को, जो कि आज तक कभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दिखाया नहीं गया, बॉलीवुड फिल्मों में, उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया. राइट, और वही कह रही है वो कि फिल्म्स नाउ नीड टू बी मोर रियल एंड दे नीड टू बी मोर लेयर्ड कैरेक्टर्स, क्योंकि फिल्मों में जो कैरेक्टर्स है वो भी तो इंसान ही है, और हर इंसान के सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं. सो इफ यू आर शोइंग सो मेनी डिफरेंट सीन्स इन द फिल्म्स, यू कैन आल्सो टॉक अबाउट द सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ फीमेल कैरेक्टर. बिकॉज़ सागा, आप अगर आपको भी मेरे ख्याल से नहीं याद होगा, आज से पहले ऐसी कौन सी पिक्चर थी जहां अगर किसी किसी महिला के सेक्सुअल डिजायर को दिखाना है तो वो किसी गाने के जरिए ही दिखाएंगे, दैट राइट फ्रॉम हेलन जी के जमाने से, पिया तू अब तो आजा शोला सावन. You have to remember that there the woman herself is also being very attractive and attracting men. तो लड़कियों को भी वहां पर objectify किया गया है in order to show her sexual desire. So it's a topic which is unexplored. It's a topic that now films are taking the lead and showing it subtly in their own different ways. और अच्छा लगा देखकर कि directors are also stepping forward and speaking openly about it, and that this change is happening.